Welcome again children in your English class. Let's start today's lesson. Today's date is 17th of June 2021. Day is Thursday. Subject is English literature and topic is revision 4. So children, today we are going to do the revision 4 in English. And we are going to start with lesson number 3. Lesson number 1 and 2 I have covered in the previous video. In lesson number 3 you already know the story of brave Bubbly and how she saved 6 children from drowning and she got the award from the Prime Minister. I had explained it. You can go through the previous videos for looking for the explanation of the story. Now in this lesson you have got the exercises part. These are the exercises. First is the fill in the blanks. So you have to learn these fill in the blanks. First is the Prime Minister of India gave a bravery award to Bubbly on 25th January 2005. अब इसमें आपको कोई भी एक फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा और आपको टिक करना पड़ेगा सही आंसर को. ठीक है. सेकेंड इज बबली ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्कूल बट हर पेरेंट्स हैज़ नो मनी फॉर द स्कूल फी. थर्ड, शी लाइक्स टू हेल्प हर फैमिली एंड फ्रेंड्स. फोर्थ, in the evening on 30th June 2004, 6 young children were playing on the banks of the Ganga. अब यहाँ पे आपको दोनों में से कोई भी एक आ सकता है fill in the blanks. They climbed onto a vegetable cart and started jumping on it. And last one, Bubbly jumped how many times? 3 times into the water to save the children. Why? To save the children. So you have to learn this fill in the blanks. Okay. एंड आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा आएगा और करेक्ट आंसर को आपको टैप करना होगा. देन A2 सर्किल A और B फॉर द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस रहेंगे. सेम पैटर्न में रहेगा क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस और आपको करेक्ट ऑप्शन को टैप करना होगा. फर्स्ट इज बबली सेव्ड 6 चिल्ड्रन फ्रॉम ड्राउनिंग इन अ रिवर और फॉलिंग इन अ वेल. ए आंसर है ड्राउनिंग इन अ रिवर. द कार्ट विथ 6 चिल्ड्रन ऑन इट. A rolled down the sandy road towards the river. Roll down the sandy slope towards the river. So B, roll down the sandy slope towards the river. Third is who helped Bubbly save the children? Only Bubbly's brother helped her save the children. All the people helped Bubbly save the children. So only Bubbly's brother helped save her children. Answer number A. Fourth, who wrote about Bubbly's brave deed? A shopkeeper wrote about it in Amar Ujala. B, a newspaper reporter wrote about it in Amar Ujala. So answer is B. A newspaper reporter wrote about it in Amar Ujala. Then there is vocabulary. Here you have been given the opposites. You have to learn the opposites of different words like honesty, dishonesty, light, darkness, victory, defeat, goodness, badness, politeness, rudeness, tidiness, untidiness. Okay, already we have done this. So आपको ये सारे वर्ड ऑपोजिट वर्ड्स लर्न करने होंगे ताकि आपको पता रहे कि वहाँ पे कौन सा आंसर आपको टिक करना है. देन द एक्सरसाइज, you have to add y on the underlined word and make it a adjective. Okay, a field which has a lot of grass in it, a grassy field. A day when there is a strong wind, a windy day. A mountain covered with snow, a snowy mountain. ओके, सो ये आपको इसी टाइप से लिखा हुआ आएगा और आंसर आपको दिए रहेंगे 3 और जो करेक्ट आंसर होगा उसको आपको टिक करना होगा. देन दीज आर द कलेक्टिव नाउन्स. ठीक है, यहाँ पे भी आपको इसी टाइप से फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा और आंसर्स दिए रहेंगे, ऑप्शंस दिए रहेंगे एंड यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड अ बुके. अ ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड अ स्वार्म. A group of mountains is called a range. A group of lions is called a pride. A group of monkeys is called a troop. A group of elephant is called a herd. Already done. So आपको पता होंगे आंसर्स ऑलरेडी, आपको सिर्फ इन्हें रिवाइज करना होगा. Then there is abstract noun in the following sentences. A, first one, we should show kindness to animals, not cruelty. So kindness and cruelty are the abstract noun. Everyone admires Meena for her beauty. Admires and Meena. Children should have the qualities of politeness and truthfulness. So here politeness and truthfulness. The Indian soldiers fought the war with great courage. So answer is courage. The teacher said write down the length and breadth of this table. Length and breadth. Devram lived in a village in his boyhood. The answer is boyhood. तो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन पता होने चाहिए. वहाँ पे आपको सेंटेंस लिखा होगा, आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन टिक करना होगा. ठीक है. देन
fill in the blanks with a और an. So you know कहाँ पे आपका a लगेगा. अगर vowel दिया है तो आपका an लगता है, अगर वो consonant दिया है तो आपका a लगता है. A kite, an ice cream, an onion, an Englishman, a pocket, a map, a friend, an eagle, an X-ray, आ यूनिवर्सिटी. अब यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर यू की साउंड आती है या जैसे यूनिवर्सिटी, यूनियन, तो आप ए लगाते हैं. और यहाँ पे क्योंकि ई की साउंड आ रही है इसलिए यहाँ पे आपने ई का यूज़ किया. ऑलरेडी आई हैड एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियोस. देन अगेन ए और एन. अ क्लाउन, अ टॉल क्लाउन, एन अफ्रीकन क्लाउन, an aeroplane, an expensive aeroplane, a red aeroplane, a man, an old man, a rich old man, an iron, a steam iron, a heavy iron. तो ये सारी एक्सरसाइजेज यहाँ तक आपको प्रिपेयर करनी है. रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज यू कैन स्किप. They are not important, so you can skip rest of the exercises. No need of doing those exercises. Those are not very useful exercises, so you can leave those exercises. Then there is the word meaning given. I had given it in your copy. So 5 word meanings were there. First is banks. Banks means the side of a river. Chased. Chase means ran after somebody. Third, rocked. Rocked means shake with great force. Fourth, deed. Deed means a very good or very bad action. And last one, award. Award means a prize. Then question answers. First question was, how many children did Bubbly save? Answer is 6 children. Second, where did Bubbly want to go? Answer is school. Third, who gave her the award? The answer is the Prime Minister of India. ठीक है, ये सारा आपको प्रिपेयर करना है फॉर योर इंग्लिश लिटरेचर. अब इंग्लिश लिटरेचर के साथ आपका इंग्लिश वर्कबुक भी इंक्लूड होगा. सो यू हैव टू प्रिपेयर द इंग्लिश वर्कबुक लेसन नंबर 3, 4, 5 and 6. ठीक है. सो आई विल गो थ्रू द एक्सरसाइजेस. फर्स्ट इज योर शॉर्ट फॉर्म्स. अब ये शॉर्ट फॉर्म्स आपको दिए रहेंगे, आपको इसका कंप्लीट फॉर्म बताना होगा. आंसर ऑप्शंस आपके पास रहेंगे. यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन. लाइक DR मीन्स डॉक्टर, ENG मीन्स इंग्लिश, RD मीन्स रोड, PM मीन्स प्राइम मिनिस्टर, मैथ्स मीन्स मैथमेटिक्स, AUG ऑगस्ट, TV टेलीविजन, ST स्ट्रीट. अब यहाँ पे आपको ये वाले ऑप्शंस ये दिए रहेंगे क्वेश्चन, और ऑप्शंस में यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन. Then again you have to write the complete forms of the following words, like don't means do not, what's means what is, they'll means they will, shan't means shall not, I'd means I would or I had, wouldn't means would not, where are is where are, they have is they have. ओके. सो ये सारे आपको शॉर्ट फॉर्म्स दिए रहेंगे, तो आपको उनका कंप्लीट फॉर्म ठीक से टिक करना होगा. यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर इन द कंप्लीट फॉर्म. देन देयर इज क्वेश्चन वर्ड्स who, what, which. So same way में you should be given the question sentence or question word where the space for the question word will be leave, and you will be blank, and there you have to put the correct question, or you have to choose the correct question word. Like here, dash did you have for breakfast? I had cornflakes and milk, so you have to fill what. Dash ice cream did you buy? Mango or chocolate? Answer is which. I bought some chocolate ice cream. Dash is your teacher. Miss Sen is my teacher. So answer is who. Dash are you doing? I'm drawing a flower. Answer is what. Dash bus goes to the zoo. Bus number 54 does. Answer is which. Dash are sitting on the bench. My sister and her friends are sitting on the bench. Answer is who. Dash left the light on in the bedroom. Veena did. Answer is who. Dash color do you like? Green or yellow? I like yellow. The answer is which. I have told you so many times, repeatedly I am telling you that English literature and workbook will come in one paper. So in the English literature paper, English workbook exercises will be included. English workbook के literature के paper में ही English literature के English workbook के exercises include होंगी. That's why I am taking both the books together, ताकि आप confuse ना हो. Okay, then there are synonyms. Synonyms मतलब similar meaning words. See का similar meaning होता है look, answer का reply, return, come back, difficult, hard, shut means close, small means little. Okay,
So ये सब already we have done all the things in our previous classes. So I'm just going through it so that if you have not covered it, you have left something, you can know where you have to, whatever you have to prepare for your exams. Okay. And moreover, one more thing is that if your work is not complete, please complete it with the help of the PDF that your teacher has given you in your class WhatsApp group. Okay, then odd one out. Here 4 words are given. One is the odd one. Rest of the 3 have same meaning. Like large, huge, thin, big. So answer here. Odd one is thin. Happy, sad, glad, joyful. Odd one is sad. Money, wealth, riches, health. Answer is health. Shout, yell, whisper, shriek. Here odd one is whisper. Frightened, brave, afraid, terrified. Brave. Bright, glowing, shining, sharp. Sharp is the odd one. Cry, shout, weep, sob. Shout is the odd one. Needle, rope, string, thread. Needle is the odd one. And the last is asking question when, where, why, how. So सब explain already हो चुका है. I'm not going to explain it once again. Just I'm going through the exercise. Okay. You already know कहाँ पे आपको who लगना है, कहाँ where लगना है. अगर place है तो where लगना है. अगर क्वेश्चन है, आपसे रीज़न पूछा जा रहा है, यू हैव टू यूज़ वाई. एंड आपसे टाइम पूछा जा रहा है, यू हैव टू यूज़ व्हेन. एंड आपसे अगर पूछा जा रहा है कि प्लेस के बारे में तो वेयर. ठीक है. एंड हाउ, दैट मीन्स कैसे आप जाते हैं, बाय विच मीन्स. सो डैश डज मिस्टर सिन्हा गोज टू हिज ऑफिस, ही गोज ऑन फुट. सो हियर क्वेश्चन वर्ड इज हाउ. डैश इज योर बर्थडे, आपसे टाइम पूछा जा रहा है, सो व्हेन इज योर बर्थडे. डैश आर यू क्राइंग, रीज़न पूछा जा रहा है, बिकॉज अ बी स्टंग मी, वाई आर यू क्राइंग. डैश आर चिल्ड्रन, प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है, दे आर इन द पार्क, सो वेयर आर द चिल्ड्रन. डैश डज सन राइज, यहाँ पे अगेन टाइम इन द मॉर्निंग, सो व्हेन. डू यू गो टू बेड एट 8:30, दैट इज अगेन टाइम, सो व्हेन. डैश इज द डॉग बार्किंग, अगेन आपसे रीज़न पूछा जा रहा है, बिकॉज देयर इज समवन नॉकिंग एट द डोर, सो यहाँ पे अगेन वाई. डैश इज योर हैंकरचीफ इन माई पॉकेट, अगेन आपसे यहाँ पे आपसे प्लेस पूछा गया है, सो यू हैव टू टेल द you have to fill in the question word where. So these are the revision work for the English literature. I have made some sample questions like used to do. So English literature revision lesson number 3 and your workbook exercises are given in this sample questions. First question is, how many children did Bubbly save? So how many children Bubbly saved? 6, 2 or 5? It was 6. So you can tick 6. The meaning of award is, award का meaning क्या? A gift, a prize or toy? It is a prize. A group of flowers is called a troop, range or bouquet? It is a bouquet. Dash African clown, A-N or the, an African clown. Complete form of DR is doctor, mathematics or road? It is doctor. And again, dash did you have for the breakfast? Who, what, which? So what did you have for your breakfast? Synonym of see is, see का मतलब एक और synonym क्या होगा? Little, shirt और look. See का होगा look. Kick the odd one out. Needle, rope, thread और string. इनमें से odd one क्या है? Needle. So इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस आएंगे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है फॉर योर एग्जाम. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.